ओके हेलो एवरीवन मो ना होची अनुद मिश्रा आउ मु भुवनेश्वर एबे एमबीबीएस करची आज आमे स्टार्ट करिबा एग्जाम्पलर रो नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एडा होची क्लास 11 एग्जाम्पलर रो चैप्टर नंबर 13 आउ बॉटनी रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर ए चैप्टर एनसीईआरटी रो पढिला परे भलो से दी तीन थरो तमे मु सजेस्ट करबी गोटे थरो एनसीईआरटी जाईकी माने एग्जाम्पलर रो क्वेश्चन सॉल्व करबा पूर्वरु तमे टिके एनसीईआरटी को प्रथमे भलो कि पढी दियो काहेकि ना डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रे किछि क्वेश्चन बाहर भी था जोटा कि एक्चुअली प्रीवियस एडिशन ऑफ एनसीईआरटी रे रहउतिला किछि किछि टॉपिक्स ताको से माने एग्जाम्पलर रे बेजा काढी नाते तो एक्सपेक्टेड अछि कि नीट की बोर्ड्स नॉट श्योर किंतु नीट रे ए क्वेश्चन बेले बेले पळे आसे से एक्स्ट्रा टॉपिक्स मु तुमको ए सेशंस जा करे क्लियर करे देबी ठीक अछि जहां भी मते लागो कि एनसीईआरटी रे दिया है नी किंतु एग्जाम्पलर रे पचरा हेछि से टॉपिक जा मु तुमको बते देबी हला ताकि तुमको जे प्रॉब्लम हेबनी तो ता सेते मु कोची एनसीईआरटी एक्चुअली तमे ए वीडियो देखिबा पूर्व एनसीईआरटी रो वीडियो की एनसीईआरटी को भलो से पढिला परे जाय कि तमे ए चैप्टर ए एग्जाम्पलर को आरंभ करिवो ता पूर्व कले तुमको किछि भी फायदा किछि हेबनी डायरेक्ट एग्जाम्पलर रो क्वेश्चन सॉल्व करले काहे ना एनसीईआरटी बहुत इंपोर्टेंट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रोचे एग्जाम्पलर हैला चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमें आगो जिबा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रे और एमसीक्यूज रो फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच मेटल आयन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल ठीक अछि तो क्लोरोफिल तमे जानि छ क्लोरोफिल ए बी सी तीनटा क्लोरोफिल अछि सब जाक भीतर गोटे रिंग स्ट्रक्चर थाए हैला आउ गोटे टेल था हैला तो रिंग स्ट्रक्चर सब भीतर था जो टेल रो लेंथ अछि सेटा ही डिवाइड करे ए बी की सी रे टेल रो लेंथ टेल जदी 15 कार्बन लॉन्ग 20 जहां भी सेटा तुमको ए बी सी कहबो बाकी तीनटा करे कॉमन अछि तमरो ए जो मझिरो रिंग आ ए रिंग रो स्पेशलिटी अछि कि यार जो एकदम सेंटर रे को एलिमेंट है मैग्नीशियम हैला तो आंसर होची तमरो मैग्नीशियम काहे कि ना रिंग रो सेंटर रे तुमको मैग्नीशियम मिलियो और सब जगह क्लोरोफिल दे ए रिंग ओके which pigment acts directly to convert light energy to chemical energy second question ठीक अछि लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी देखो क्लोरोफिल ए बी xanthophyll कैरोटीनॉइड तीटा टाइप रो पिगमेंट थाई तम क्लोरोप्लास्ट गोटे तो गोटे था तमरो रिएक्शन सेंटर आउ एक्सेसरी पिगमेंट जाकू एंटीना को रिएक्शन सेंटर रु तमरो इलेक्ट्रॉन जीव आउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रु एक ही एनर्जी प्रोड्यूस करिवो एक्सेसरी पिगमेंट्स तांकर एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर करंती हैला तो रिएक्शन सेंटर इज कंपोज्ड ऑफ क्लोरोफिल ए और एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी xanthophyll कैरोटीनॉइड्स ये सब एक्सेसरी पिगमेंट्स तो आंसर इधर कौन है कथा देखो क्लोरोफिल ए ही मेन पिगमेंट जोटा कि डायरेक्टली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करछि काहे कि ना जदिटा क्लोरोफिल ए रो मॉलिक्यूल आ एटा होछि तमरो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो क्लोरोफिल ए रो गोटे इलेक्ट्रॉन जीवो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ताको आगु फॉरवर्ड करबो ईटीएस तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोठी होछि क्लोरोफिल ए रे होछि तो आंसर होछि क्लोरोफिल ए थर्ड क्वेश्चन रे आसीबा which range of wavelength in nanometer is called photosynthetically active radiation PAR एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा पचारंती कि को रेडिएशन को वेवलेंथ थ्रू को वेवलेंथ जाय तमरो फोटोसिंथेसिस हुए ताको कोनती फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR तो
जदि तुम देखियो तो PAR ऑफ कोर्स फर्स्ट जिंस इट विल बी इन विजिबल रेंज हैला विजिबल रेंज रे ही रहइबो मैक्सिमम तुम जानचो रेड आउ ब्लू आउ मिनिमम फोटोसिंथेसिस हुए ग्रीन लाइट हैला एठे ताल तुम कंफ्यूज हे जिवो कि तमरो जो विबियर अछि सीक्वेंस मैक्सिमम एपटे रहउछि एपटे भी रहउछि मिनिमम एठी रहउछि तो तमे कहबो कि मो रेंज टा कोन कहबी याकू मझीरो जो ग्रीन लाइट अछि ताकू हटै कि रेंज कहबी ताकू इंक्लूड करके किंतु तमे जानिछो कि मिनिमम रो माने जीरो ना फोटोसिंथेसिस तो मिनिमम ग्रीन रहउछि ता माने एडा नै कि बिल्कुल ही होने किछ ना किछ फोटोसिंथेसिस ग्रीन रीजन रे भी होउछि तो तमे ए पूरा रेंज को कोट करियो आ अप्रोक्सीमेटली ए रेंज तमरो अछि 400 रु हां 400 टू 700 नैनोमीटर okay which light range is least effective in photosynthesis even we just discussed carefully green light is least effective यार मु बोधे वो गोटे सेशन रे मु यार तुमको एटा भी कहथि आई थिंक फोटोसिंथेसिस रो जतरा मु एनसीईआरटी करोथली ततरा मु कहिथली यार रीजन हम आथरे तुमको डिस्कस करी कोछि यार एक्चुअल रीजन लीफ हला तमरो अछि लीफ तो किछि भी जनरल ऑब्जेक्ट नथला तीनटा ऑब्जेक्ट मन अछि गोटे ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट हला गोटे ब्लू कलर ऑब्जेक्ट आउ गोटे व्हाइट कलर ऑब्जेक्ट जोटा तुमने ड्रॉ करि परिबेनी किंतु ट्राई करिवि टिके ब्लैक बैकग्राउंड क्रिएट करिवि नु व्हाइट ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करिया को देखि हला हला एडा होते तमरो व्हाइट ऑब्जेक्ट तो मते कुहो कि ए जो ब्लैक ऑब्जेक्ट व्हाई इज इट ब्लैक एडा बुकु तमे ब्लैक कलर काई देख काई कि ना तमरो जो लाइट आसुची व्हाइट लाइट जो लाइट आसुची एथे ये पूरा पूरा ताको अब्सॉर्ब कर 100% लाइट को से अब्सॉर्ब कर दोची गुट्टे भी लाइट को से बाहर को जिबा को दोने सेत पे तुमको किछि दोस नहीं तुमको ब्लैक कलर दिसची नो लाइट नेक्स्ट को भी गोटे कलर्ड ऑब्जेक्ट जो लाइट आसीबो से कोन करियो सब जाको लाइट अब्सॉर्ब कर देबो एक्सेप्ट जो कलर रो से ऑब्जेक्ट तो खाली ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करिवो ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करबनी बाकी रेस्ट अदर्स इट विल अब्सॉर्ब सेति पे आपको ब्लू रिफ्लेक्ट करछि तो खाली ब्लू दोसछि तुमको आखिरे बाकी सब लाइट ये अब्सॉर्ब कर दो नेक्स्ट तमरो व्हाइट ऑब्जेक्ट रे तमे लाइट जहां भी पको से सब जाको रिफ्लेक्ट करतो 100% सेति पे तुमको व्हाइट दोसछि एडा होय तमरो बेसिक साइंस एबे लीफ को कलर रो लीफ अछि ग्रीन कलर या मानने कोन या मानने होची कि जदि तमे लीफ रे लाइट पकोचो व्हाइट लाइट ताहले सब जाको अब्सॉर्ब करके से का को रिफ्लेक्ट करछि ग्रीन ग्रीन लाइट से छाड़ दोची बाहर बाकी सब से अब्सॉर्ब कर दो बाकी सब अब्सॉर्ब करके से कोन करछि फोटोसिंथेसिस करछि और ग्रीन लाइट को बेसिकली से रिफ्लेक्ट कर सेफ्टी पाई तमरो जो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस एमती था ग्रीन लाइट रे फोटोसिंथेसिस फॉर्म हो लेकिन ग्रीन लाइट तो अब्सॉर्ब भी होनी ग्रीन लाइट तो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाउछ बुझा पड़ा तुमको रीजन कोन सेफ्टी पाई तमरो ग्रीन लाइट इज द लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज़ इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लांट तमरो जो पिगमेंट अछि फोटोसिंथेसिस करेबार तांकर कलर ग्रीन अछि सेति पे ग्रीन लाइट से माने रिफ्लेक्ट कर दियंती बाकी सब लाइट अब्सॉर्ब करंती सेति पे तांकर भीतर फोटोसिंथेसिस और ग्रीन लाइट रे कम फोटोसिंथेसिस ओके
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एडा तक तमरा फोटोसिंथेसिस दिया है नी किंतु तमे टिके जनरल नॉलेज लगे कि कहि परिबो कि कीमो माने केमिकल सिंथेटिक माने सिंथेसिस यदि फोटोसिंथेसिस अछि फोटोसिंथेसिस रे फोटो माने कोन लाइट सिंथेसिस लाइट रु तमे फूड को सिंथेसिस करछो ताले ताको कोनते फोटोसिंथेसिस सिमिति कीमोसिंथेसिस माने कोन केमिकल रु तमे फूड सिंथेसिस करछो नॉट दिस एबे को ऑर्गेनिक केमिकल्स की इनऑर्गेनिक केमिकल्स तो जदि तमे ऑर्गेनिक केमिकल को ब्रेक डाउन करिकी खाइबा सिंथेसाइज करछो ताले तमे किछि नुवा काम करछो ऑर्गेनिक केमिकल ऑलरेडी के गोटे बनै के रखछि प्लांट की के एनिमल सेटा कोई ऑर्गेनिक कोनती ताकू तमे ब्रेक डाउन करछो ताले तमको कोन को आजिबो कीमो सिंथेटिक को आजिबो नि तमको सैप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफिक पैरासिटिक ए टाइप रे जिंसो तमको आजिबो तो कीमो सिंथेटिक माने इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो से माने डायरेक्टली फूड सिंथेसाइज हैला जेमति कि ऑक्सीजन हेगला नाइट्रोजन हेगला तो कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया कोन करबो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को मिसै के कोन बने देबे NO2 NO एटसेट्रा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटाई करंती हैला एटा ଗୋଟେ एग्जांपल ऑफ कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया बुझा पड़ला डायरेक्ट इनऑर्गेनिक केमिकल जो से माने खाइबा बने दिया energy required for ATP synthesis in photosystem 2 comes from ATP synthesis in photosynthesis 2 photosystem 2 रे कौन हो सब तो आगे रे सेटा पार्टिसिपेट करे इट ओनली पार्टिसिपेट्स इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैला इलेक्ट्रॉन आसेनी किंतु एटीपी सिंथेसिस जदि तमको कथा कुहा होची तो तमे गुटे ही आंसर दो सेटा होची प्रोटॉन हैला इवन इन फोटोसिस्टम 1 और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन सॉरी एटीपी सिंथेसिस by एनर्जी प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करिकी ही आसे हैला तो जेबे भी एटीपी सिंथेसिस रे कथा वार्ता आसे वो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लांट रे हो एनिमल हो कोठी भी हो एटीपी सिंथेसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक डाउन करिकी बना नेक्स्ट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म तो लाइट रिएक्शन रे सबडा अगर लाइट रिएक्शन होए तार प्रोडक्ट जिबे डार्क रिएक्शन रे सेटू बनियो तमरो ग्लूकोज लाइट रिएक्शन रे को बनिबो शुगर बनिबो शुगर रो सब जाक ऑप्शन तमे डिलीट कर ठीक अछि तो एटीपी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर भी रॉन्ग ऑक्सीजन डोनर किछि नथा है एक्चुअली करेक्ट आंसर हबा कथा एटीपी हाइड्रोजन डोनर और रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीजन किंतु हमें ऑप्शन सी को मोर और लेस करेक्ट मानी परिबा एटीपी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन डोनर भी तो हाइड्रोजन ही दोछ ना तो हमें हाइड्रोजन को एज अ प्रोडक्ट मानी परिबा अब हाइड्रोजन डोनर रे मु कहा कथा कहछि एनएडीपी मु ए कंपाउंड रो कथा कहछि आपको हाइड्रोजन डोनर और रिड्यूसिंग एजेंट कहंती तो एडा होछि तमरा लाइट रिएक्शन रो प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच ओके dark reaction in photosynthesis is called so because एटा बहुत ही प्रिलिमिनरी क्वेश्चन माने एटा सब बेले क्लास से डिस्कस हुए डार्क रिएक्शन माने एटा नै कि लाइट रो एब्सेंस हैला डार्क रिएक्शन माने इट इज अकरिंग इंडिपेंडेंट टू लाइट किंतु लाइट रिएक्शन रो प्रोडक्ट भी तुमको डार्क रिएक्शन रे दरकार तो लाइट जदी हेबनी तो लाइट रिएक्शन हेबनी लाइट रिएक्शन जदी हेबनी तले डार्क रिएक्शन ही पाइबनी काकी ना लाइट रिएक्शन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज डार्क रिएक्शन ऑफ स्टार्टिंग प्रोडक्ट हैला तो लाइट थ्रू कौन है लाइट रिएक्शन रो जो प्रोडक्ट्स दे आर द सबस्ट्रेट्स
for dark reaction. एबे हमें प्रोडक्ट जो डिस्कस करो ATP NADPH और ऑक्सीजन एगुडा को ऑक्सीजन है ATP और NADPH दे आर द प्रोडक्ट्स फॉर डार्क रिएक्शन. तो डार्क रिएक्शन रो लिटरल मीनिंग कोन? It can occur in dark also. It does not depend on light energy. Can occur during daylight. Cannot occur during daylight. It occurs more rapidly at night. So therefore, dark reaction does not depend on light energy. हमें eliminate करेगा. इटा तो पक्का wrong. It depends. It definitely depends on light energy. बिना light energy रहे तो हमारा light reaction है बनी, light reaction of product है बने और dark reaction में दिखाएगा. It cannot occur during daylight. इटा भी भूल daylight रहे हुए. It occurs more rapidly at night. इनके किच नहीं. तो ऑप्शन तो हमर हेगला इट कैन अकर इन डार्क ऑल्सो. यार याको जानिया पे तमो गुटे पाथवे अछि कैम पाथ. ठीक है देखो डार्क रिएक्शन माने को साइकिल कथा तोरा होछि केल्विन साइकिल. तो कैम पाथवे रे कोड हुए कैम पाथवे रे तमरो जो प्लांट कैम प्लांट से माने कोन करिवे दिन जाक खाली लाइट रिएक्शन करे डार्क रिएक्शन करेबे. दिन रे ओनली लाइट रिएक्शन हेबो आ बहुत प्रोडक्ट जनरेट होता. तापर जेतरे राती हे जबो जेतरे ए प्रोडक्ट मिसई करी डार्क रिएक्शन स्टार्ट करिए. तो या डार्क रिएक्शन कैन अकर इन द डार्क ऑल्सो. ए गुटे रीजन पे ए क्वेश्चन टिके ट्रिकी अछि है ना. डायरेक्टली आस पाइबो तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट PEP is the primary carbon CO2 acceptor in phosphoenol pyruvate is the primary CO2 acceptor in C4 plants. Enzyme is PEPase. Hela how C3 plants ro primary CO2 acceptor kiye RUP ribulose bisphosphate. C2 plants do not exist. Both C3 C4 plants C3 plants re PEP hi not PEPase hi not. Next, splitting of water is associated with photosystem 1, lumen of thylakoid, both photosystem 1 and 2, inner surface of thylakoid. तो देखो photosystem 1 रो photosystem 2 रो lumen of thylakoid दिया है ऑप्शन रे, inner surface of thylakoid membrane दिया है. एटा होता है thylakoid अल्लाह एटा होता है thylakoid membrane. एटा होता है thylakoid lumen. Water splitting complex inner side of the thylakoid membrane रहता है. It is not associated with lumen of thylakoid. It is actually not associated with photosystem 1. कहीं ना photosystem 1 रे water splitting complex ना है. photosystem 1 is not कहीं ना इलेक्ट्रॉन तो रिसाइकल हो जाती तो तुमको इलेक्ट्रॉन रिप्लेनिश करे पे वाटर को स्प्लिट करे दरकार होगी. तो 1 2 3 पूरे वाला and genetically it is associated with the inner surface of thylakoid membrane. सेफ्टी पाई तमरो जो हाइड्रोजन रोची से एठी आसुची आउ प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होची. Next, the correct sequence of flow of electrons in light reaction. तो light reaction दीटा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. चेक करिबा हम कि नॉन साइक्लिक और साइक्लिक भीतर कोटा दिया है कोटा ठीक अछि. PS2 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम्स PS1 पैराडॉक्सिन PS1 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम PS2 पैराडॉक्सिन PS1 पैराडॉक्सिन PS2 PS1 प्लास्टोक्विन. या माने एटा ने कि आगो PS1 आसो तापर PS2 आसो. इट इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी. माने PS1 आगो डिस्कवरी हेतला PS1 आगो खोजा हेतला सिपे PS1 तारो ना PS2 परे खोजाला सिपे तारो ना PS2. ओके या माने एटा ने तारो सीक्वेंस होची PS2 आगो यूज आसे तापर PS1 आसे. The enzyme that is not found in a C3 plant is RUBP carboxylase rubisco found in a C3 plant. ATP synthase found in a C3. NADP reductase found in the C3 plant.
ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିଲି PEP case or PEP carboxylase is not found in the C3 plant. The reaction that is responsible for the primary fixation of CO2 is catalyzed by. Okay. They have एमाने कहि नांती कि C3 कथा को होची और C4 कथा को होची तो हमें दीटा जाको को कंसीडर करबा बोथ. तो C3 रे किए रूबिस्को, C4 रे किए PEP case. Answer C is correct. हाँ ए बी तमे जदी पके देबो ताले तमर बोले परियो कि दे हैव नॉट स्पेसिफाइड माने कहि नांती कि हमें C3 कथा कहूछु कि C4 कथा कहूछु तो तमे दीटा को अज्यूम करबो और आंसर देबो रूबिस्को एंड PEP case. ठीक अछि. When CO2 is added to PEP, the first stable product synthesized is C4 cycle. Hela. Answer होची oxaloacetate. चलो we have done with MCQs. आमे जिबा very short answer. Next, very short answer type question of first होची examine the figure. Is this structure present in an animal cell or a plant cell? First तो को ये figure कहा है. This is a figure of a chloroplast. Okay, so definitely it is a present in only a plant cell. Okay, can this be passed on to the progeny? How? So definitely chloroplast जेतले गोटे सेल अछि ता पाखरे पांचटा क्लोरोप्लास्ट अछि जेतले से डिवाइड हेबो एटा छोटो सेल रे तो से अधा क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हे जिवे ता परे जेतले से सेल जाको ग्रो करिवे तांको भितर क्लोरोप्लास्ट डिवीजन करिकि chloroplasts are they can divide on themselves. Hela, so seମିତି they can be passed on to progeny. How? Yes, they can be passed on to progeny. How? By mitosis. Hela, name the metabolic process takes place in processes marked 1 and 2. So 1 and 2 actually 1 से माने I think से माने thylakoid को देखा कुछ और चलते thylakoids और grana और membranous part. 2 से माने देखा कुछ और चलती स्ट्रोमा. ओके, तो 1 रे कौन हुए लाइट रिएक्शन, 2 रे कौन हुए डार्क रिएक्शन और केल्विन cycle. Okay, next question number 2. Based on the above equation, answer the following questions. Where does this reaction take place in plant? Hydrogen, water changing into H plus and oxygen and electron. Mane this is basically splitting of water. So এটা কোটি হয় क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट रे भी कोठी होए
थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स अभी कोठी हुए इनर साइड ऑफ membrane and it is associated with photosystem 2 hela to eta hochi taro location. What is the significance of this reaction? A reaction ro kamo kono to supply electrons lost by photosystem 2. तो हमें जानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रे कोन होवे photosystem 2 रो इलेक्ट्रॉन जाई की NADPH प्लस इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली photosystem 2 रो NADPH को ट्रांसफर हे सेल किंतु से इलेक्ट्रॉन को रिप्लेनिश करिवार काम के करिवो वाटर स्प्लिटिंग. That is the significance of this reaction. Cyanobacteria and some other photosynthetic bacteria do not have chloroplast. How do they conduct photosynthesis? तो cyanobacteria एटा तुमको डाइवर्सिटी रे पढ़ाई थिबो कि cyanobacteria तो सेल वॉल टाइप रो गोटे सेल वॉल रे गोटे स्ट्रक्चर था. एटा जदी तार सेल वॉल एटा जदी तार सेल वॉल एटा तार सेल मेम्ब्रेन एटा जदी तार सेल वॉल cyanobacteria रो तो जेतेले तमे सेल भीतर को जिवो तमे देखिबो कि सेल वॉल क्रॉस कला परे साइटोप्लाज्म रे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स अछि यांको कहंती क्रोमैटोफोर्स हला although rarely seen general prokaryotic animals रे तुमको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में देखते हो ठीक है रेयर किंतु in case of your this cyanobacteria and other photosynthetic bacteria you can easily clearly see membrane structures like chromatophores. Chromatophore रो काम कोन और काम होची के सेक्टे पिगमेंट्स. क्रोमैटोफोर जो पिगमेंट्स है सॉरी फॉर दैट. तो हमें कथा होतु क्रोमैटोफोर विषय मु कहतली कि क्रोमैटोफोर आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जोटा कि तुमको प्रोकैरियोट से मिले. ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भीतर कोन था पिगमेंट्स. ए पिगमेंट कोन करंती फोटो सिंथेसिस हला. तो blue green algae or cyanobacteria or photosynthetic bacteria have their own versions of chloroplast known as chromatophores. Next. NADP reductase enzyme is located on outer side of thylakoid membrane. तो एटा जदी thylakoid तो एठी लोकेटेड अछि NADP reductase enzyme. काहे कि ना it removes H plus from
stroma and gives it to NADP plus. ହେଲା, breakdown of proton gradient leads to release of energy which is trapped in ATP. ହେଲା, can girdling experiments be done in monocots? If yes, how? If no, why not? तो यहाँ को पढ़िया पे तुमको एनाटॉमी पढ़िया रही. girdling माने specifically removing xylem in order to check function of phloem. माने जो वाटर कंडक्टिंग सिस्टम जाइलम ताको स्पेसिफिकली रिमूव कर दबो तो तुमको फ्लोएम रो काम जाना पड़ियो कि फ्लोएम खाली वाटर ट्रांसफर करे कि कौन करे. किंतु तुमर जो मोनोकॉट प्लांट अछि तार जदी क्रॉस सेक्शन तमे देखिबो तमे डाइकॉटर देखो डाइकॉटर क्रॉस सेक्शन रे तुमको सेंट एमिति तुमको दोसी जीवो कि पेरिफेरली तुमर जाइलम अछि भितर तुमर फ्लोएम अछि. तो तमे कौन करिवो तमे ए जाइलम को बाहर कर देबो तमे जाइलम को बाहर कर देबो तो खाली फ्लोएम रह गला. किंतु मोनोकॉट रे कौन हबो मोनोकॉट रे जाइलम फ्लोएम रिंग रे प्रेजेंट से एमिति रहबो जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम एमिति रहबो. तो तमे को हिसाब रे तमे गर्डलिंग करिवो जे तमरो केमिति तुमको जाइलम को स्पेसिफिकली बाहर करिवो. इट इज नॉट पॉसिबल. हैला, because they are present in. Why it is not possible? Why? If no, why not? First answer is no, because xylem phloem are scattered as bundles. हैला, तो तमे गर्डलिंग करि परियो. Next 6th question. CO2, ATP, NADPH water gives glyceraldehyde 3-phosphate, ATP, NADP plus and 8 inorganic phosphate. এটা হচ্ছে ডার্ক রিঅ্যাকশন. হ্যালো, analyze the above reaction. How many molecules of ATP and NADP is required to fix one molecule of CO2? For 6 molecules, you need 6 shadow. For one molecule, you need 3 ATP and 2 NADPH2. Definitely, right? Where in chloroplast does this process occur? Stroma. Next. Does moonlight support photosynthesis? No. Some of these terms or chemicals are associated with the C4 cycle explained. Hatch and slack pathway. Calvin cycle. Pep carboxylase bundle sheets. Hatch and slack pathway होची entire सिर्फ hatch and slack pathway होची. Calvin cycle कौन? Regular old C3 cycle, which also occurs as a part of C4 cycle. Pep carboxylase. It is the enzyme. जो enzyme तुम्हारा primary CO2 fixation product बना है. Oxaloacetic acid from CO2 and PEP. Bundle sheath cells, where actual C3 cycle occurs, or where rubisco is present. It also bundle sheath cells.
नाइन्थ क्वेश्चन को जिबा where is NADP reductase enzyme located in the chloroplast? What is the role of this enzyme in proton gradient development? मैं तुमको आगुरी कहଥିଲି NADP reductase enzyme thylakoid रो membrane रो outer side रे अछि outer side of thylakoid membrane towards the stroma. और ये कौन करिवो वो रिएक्शन को कैटलाइज करे हमारा NADP प्लस को नेबो और NADPH2 बनेगा. In this process it will remove H plus and स्ट्रोमा. तो तुम्हारा नेट स्ट्रोमा वर्सेस लूमेन. स्ट्रोमा रू -1 लूमेन रू 0. तो स्ट्रोमा रू H प्लस कमी कमी का चलची लूमेन रे H प्लस अदर प्रोसेस तो बॉडी बॉडी का चलची. तो गोटे प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप करूची हेल्प करूची प्रोटॉन ग्रेडियंट को सेटअप करिवारे. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी प्रोटॉन ग्रेडियंट है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी प्रोटॉन ग्रेडियंट सपोर्ट मिले. तो बुझा पड़ेगा ना NADP reductase enzyme का रोल. 9th क्वेश्चन डन. Tenth question बुझो. ATPase enzyme consists of two parts. What are those parts? How are they arranged in the thylakoid membrane? Conformational change occurs in which part of it? तो वो ATPase रा गोटे डायग्राम बनेगी तुमको देखेबी. तमरा thylakoid membrane हला एडा होची तमरा lumen, एडा होची तमरा stroma. ATPase enzyme F0 and F1 particle को बनेगी. F0 particle is a transmembrane pore. It allows H plus to pass. Hela. F1 is the real ATP synthesis of enzyme. तो हेबो कोन लुमेन रे अछि बहुत H प्लस. हेला और बाहर अछि बहुत कम H प्लस स्ट्रोमा रे. तो गुटे H प्लस माने तमरा जो H प्लस F0 रो बाहर जाके बाहर को जिबो. तो F1 पार्टिकल रे हेबो तमरा कन्फर्मेशनल चेंज हाउ सी कन्वर्ट कर दबो ADP को ATP. हेला. तो ATPase enzyme रो पार्ट्स F0 and F1.
एक्चुअली CF0 एंड CF1 होते हैं कहीं क्लोरोप्लास्ट अच्छी ना तो CF0 और CF1 how are they arranged one is a माने how are they arranged माने CF0 is a transmembrane core and CF1 is a protruding portion and then conformational change occur in which part CF1 part है which products are formed during light reaction on photosynthesis which are used to drive the dark reaction देखो लाइट रिएक्शन में को प्रोडक्ट फॉर्म है ATP O2 NADPH2 ए भीतर to drive the dark reaction you need ATP and NADPH कहीं ना one glucose molecule को बनया पाए तुमको दरकार 12टा ATP सॉरी 18टा ATP आउ 12टा NADPH2 okay what is the basis for designating C3 and C4 pathways of photosynthesis it is based on the first product formed after fixing CO2 if it has 3 carbons जोड़ा ना हो pyruvate then PGA sorry then it is C3 or if it has 4 carbons oxaloacetic acid then it is called C4 cycle let's move on to short answer type succulents are known to keep the stomata due to requirements मुझे तुमको कही गोटे पाथ अच्छी कैंप पाथ तो चलो आम डिस्कस करवा कैंप क्वेश्चन एटा गोटे जिनस अच्छी जो पुराना इनसाइट रे दिया था नुआ इनसाइट रे नाही तो मु तुमको कहि दउची यार फुल फॉर्म होची क्रूसेलेशियन acid metabolism pathway CAM pathway हैला तो ये पाथवे कौन होची देखो दिन डे एंड नाइट दीटा टाइम रे अलग अलग पाथवे चलू तो डे टाइम रे कौन हेबो हमर सनलाइट अछि स्टोमाटा इज ओपन तो तमरो डे रे आसीबो कोनटा स्टोमाटा इज ओपन तो CO2 भीतर आसीबो स्टोमाटा ओपन तो सेल भीतर कोन आसीबो CO2 आउ CO2 गुटे सॉरी सॉरी डे टाइम रे तमरो स्टोमाटा क्लोज रहछ अच्छा हां डे टाइम रे जदि स्टोमाटा क्लोज अछि तो CO2 भीतर आस परिबने कि ऑक्सीजन बाहर को जाय परिबो तो तमरो लाइट रिएक्शन हे चलची कहीं लाइट अच्छी लाइट रिएक्शन रो जनरेट कोन होची ATP और NADPH ATP और NADPH बहुत जनरेट होची से ATP और NADPH नाइट टाइम रे कोन होची तमरो स्टोमाटा ओपन हे जाउची आउ CO2 भीतर आछी हैला तो
CO2 भितर आसकी कोन बनौची बाइकार्बोनेट आउ पेप आउ बाइकार्बोनेट मिसी की C4 एसिड बनौचंती हैला C4 एसिड तमरो जाय कि स्टोर हे जाउची स्टोर भितर तो डे टाइम रे तमरो भितर स्टोमाटा क्लोज हे जाउची आ ऑक्सीजन CO2 किछि भी भितर आसी पारुनी तो तमरो प्लांट कोन करूची ये जो C4 एसिड अछि याको बाहर कर हैला C4 एसिड रे बाहर करछि से CO2 प्लस गोटे C3 एसिड हैला CO2 बाहर की C3 एसिड बाहरला तो तमरो C3 एसिड रो तमरो ग्लूकोज बनला थ्रू केल्विन साइकिल हैला आउ से ग्लूकोज रो तुम पुणी बाहर करके पेप बनेलो आउ तमरो साइकिल चलला आउ ए CO2 ए ATP और NADPH से तो मिसी के कलर डार्क रिएक्शन हैला बुझा पड़ला चलो एडला तमरो कैंप पाथवे आउ तमरो डार्क रिएक्शन अल्टीमेटली होची तो एटा तमरो आंसर टू दिस क्वेश्चन by converting CO2 in night to C4 acid and releasing it in day. चला चलो तो आज how did you question solve करता a page को सदा chlorophyll is the primary pigment for light reaction. What are the accessory pigments? What is their role in photosynthesis? तो देखो तमरो गुटे photosynthesis रा action spectrum अछि एडा होची ब्लू एडा होची ग्रीन रेड एडा होची ग्रीन किंतु जो तमे क्लोरोफिल ए को देखो क्लोरोफिल ए खाली ब्लू आउ रेड लाइट्स रे रेस्पॉन्स करे तो तमरो जो ग्रीन लाइट रे जो रेस्पॉन्स आछे फोटोसिंथेसिस का पे आछे काहे कि ना एक्सेसरी पिगमेंट को कोटा अछंती क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी ज़ैंथोफिल कैरोटीनॉइड्स एगुडा सब एक्सेसरी पिगमेंट तांकर काम होची कि अदर वेवलेंथ रे भी फोटोसिंथेसिस चालू थिवा दरकार तो से माने अदर वेवलेंथ रो लाइट अब्सॉर्ब करिवे से एनर्जी को क्लोरोफिल ए को दे देबे और फोटोसिंथेसिस टिके टिके चलेगे रख हैला नेक्स्ट do reactions of photosynthesis called dark reaction need light explain मुन explain करि सरछे ऑलरेडी कि लाइट तो दरकार ताको डायरेक्टली नहीं किंतु इनडायरेक्टली काहे कि लाइट रे तमरो लाइट रिएक्शन हबो जो ठोकी कोन बनिबो ATP आउ NADPH आउ ATP and NADPH2 are required in dark reaction so definitely dark reactions also need light energy hello how are photosynthesis and respiration related to each other because both form ATP by creating a proton gradient तो दीटा को ATP बनाती फोटोसिंथेसिस रे भी तमरा ATP दरकार रेस्पिरेशन रे तो ATP बनार मेन काम तो ATP दीटा को बनने वाला रीजन गोटे ही कि प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन होची सेटू ATP बोल सेति पे दे आर रिलेटेड ओके तो आज पे एतिकी थाउ नेक्स्ट हमें बाकी क्वेश्चंस सेकंड सेशन रे करबा